गोवा मुक्ति दिवस समारोह में पीएम मोदी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। वहां भारतीय थल सेना की तटरक्षक नाव ने नौका परेड में हिस्सा लिया है। गोवा को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोवा दौरे पर हैं, जहां ये जो नाव जिनका प्रदर्शन किया जा रहा है वो फाइबर ग्लास से बनी हुई हैं। kV outboard motor, lithium-ion battery bank, and a battery management system to give a top speed of 6 knots and operating range of 16 nm at a speed of 4 knots. The design is developed by Konkan Maritime Cluster and is a highly stable hull form and shows how Goa is contributing to sustainable energy development in marine boats. The boat will provide a unique silent experience in hinterland tourism and enable close viewing of migratory birds, crocodiles in their natural habitat in close vicinity. देवियों और सज्जनों, अब आ रहा है इल्यूजन IL-38 सी ड्रैगन। आपकी बाईं ओर से आज इस विमान का संचालन कर रहे हैं कमांडर CM फुलसे और लेफ्टिनेंट कमांडर M बालासुब्रमण्यम। भारतीय नौसेना को लंबी समुद्री टोय की क्षमता प्रदान करने वाला यह विमान 1977 से नौसेना में उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। IL-38 सी ड्रैगन एक टर्बोप्रॉप समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, जिसमें 13 घंटे तक लगातार उड़ने की काबिलियत है। Just behind Electra, you can see the scuba diving. The state of Goa, with its beautiful coastline, also provides a great opportunity for the development of this adventure sport. We already have internationally certified scuba diving happening in Goa. Here we have Commander Skandan Warrior, a Navy veteran and a director of Scuba Evolution India, an internationally certified scuba diving school based in Goa. Along with his team of dive professionals representing this adventure sport, they are demonstrating a back roll water entry, after which they will descend about 2 meters. गोंयचो पोनेळ गोंयचें व्हडें व्हडेकारा व्हडेकारा हो व्हडेकार आमचे जिणेक दिता एक वेगळेच तरेचे एंगल आणि हातूंतल्यान भरिल्ली आमची जीण गोंयकाराच्या व्हडेकाराची। देवियों और सज्जनों, आपके सामने समुद्र की ओर से आ रहे हैं द पैंथर फॉर्मेशन। 670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैंथर विग फॉर्मेशन। पर्यटक गोंयांत येतात, कोणूय गोंयांत येतात, तांकां वाचोवपा खातीर आमचे कडेन तांची रेस्क्यू सिस्टम आसा आणि ताजे खातीर आमची लेफ्टनंट कमांडंट आमची तनुश्री बाई तुमकां सांगता। देवियों और सज्जनों, आपके सामने गोवा पर्यटन विभाग द्वारा अब बचाव अभ्यास का प्रदर्शन किया जा रहा है। It's time to demonstrate a rescue. Lifesavers will now be demonstrating a rescue drill. Indigenously built Horus Robo and an artificial intelligence-enabled Triton system, which are the first of their kind in the world, are deployed on the beach to caution the tourists as well as alert lifesavers in case of any emergency. जेन्ना एखादो उदकान देंवता आणि तो उदकान बुडूंक लागता सो दिसता तेन्ना आमचे राखणदार रेस्क्यू तयार रावतात तांकां वाचोवपा खातीर आणि ते कशे वाचयता ते आमचे सगळ्या लोकांनी पळोवचें, माणकुल्यांनी पळोवचें, कारण दर्यांत देंवप आणि वारें वादळ भरती सुकती ह्या सगळे गजालींतल्यान भरिल्ली आमची दर्याची जीण। As you can see, 2 trained lifesavers acting as victims have been rescued and put onto the rescue vehicle. जैसे ही संकट का संदेश जाता है, ट्राइटन सिस्टम इस संकेत को उठा के कुशल आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए ऑरस रोबोट और सी हॉर्स स्टार को संदेश भेजता है। आमची ही दर्याची जीण, उदकाकडे खेळपाची जीण, उदकान भितर वचून आमचे जिणेक दिवपाची एक आगळी वेगळी तरा आणि ह्या तरेंतल्यान आमी तुमकां नतमस्तक जाता, नमस्कार करता, भारताचे मानादीक
प्रधानमंत्री नरेंद्र बाब मोदी हांकां आमी मना काळजांतल्यान तांचो वेळ दिलो म्हणून आमी तांकां म्हणटा तुमची काळजाची पणटी तुमी पेट्टी दवरात, आमचे जिणेक आदार दियात. बाकी बाब बोरकार हांच्या उतरांतल्यान तुमकां सांगता, एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई, घेऊन आयला वांगडा जी तू वाट सरता सरती गई. एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई, तवरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरती गई, तवरी पंटी पेटय रे वाट सरता सरती गई. रे तुझ्या पंटेन जय थंय मेळटा ती पंटी पेटय, एक पंटी भितर पेट्टा ती जगई रे ती जगई, ती जगई रे ती जगई. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of a wonderful event presented by the Indian Navy. A warm round of applause to all the participants and grateful thanks to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for taking time off and making this event of maritime vibrancy a glorious one with his presence. Ladies and gentlemen, the weather permitted a wonderful backdrop behind the display this afternoon. Let us look up to the sky, thank the gods in unison, and finally, thanks to the large audience which came here. They've been braving the sun for the last 2-3 hours. You sure were an enthralling audience. Continue supporting your interest. Make Goa more popular among the tourist destination and certainly an international address to look up to.